So the audio is clear. If the audio is clear, please type yes. Friends, this is Basudev Panda. Welcome to Master English class. Plus to second English. VST 4. In the VST search 4 number VST. Class start करें पहले. जगन्नाथ, God bless you. तो जो मैंने भी जॉइन होचे सांग मान को सहित शेयर कर दवा जहाँ से मैंने भी जॉइन नहीं परिबे पहले. VST गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट ए वर्षर परीक्षा पे. तो विलंब करवानी सीधा जीवा प्रश्न पाक गोटे हाफ एन आवर क्लास नहीं मैं करुचे सबुदिन. तो प्रथम प्रश्न बिले once Churchill recited to the headmaster 1200 lines of a long composition written by Dash. Jai Jagannath Sibu. So once Churchill recited to the headmaster 1200 lines of a long composition written by किए लिखिते से जो 1200 धाड़ी जो पोएम था. कदा बुझेला. ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी मैक्ले, ऑप्शन डी विलियम कूपर. ठीक उत्तर कौन? ठीक उत्तर कौन? Which is correct? Which is correct? Which is correct? The right answer is option C. It's Mackay. The 1200 lines poem that was recited by Winston Churchill was written by Mackay. So Mackay is the correct answer. Option C is ठीक उत्तर Mackay. परवर्ती प्रश्न how were the names of the boys printed in the school list on examination. आगुड़े प्रश्न how were the names of the boys printed in the school list? Option A in the order of merit, option B in alphabetical order, option C in the order of grade, option D in the order of admission number. In alphabetical order. Monali Mahapatra, very good. Very good. Mr. Somya, alphabetical order. Lakshmi, option B, B तो ठीक उत्तर alphabetical order लिखा उतला. Option B हो बोले ठीक उत्तर. पर प्रश्न देखिए. As Sam Petroda says, there is no substitute for this. Sam Petroda कौन कहते बोले? There is no substitute of this. कार substitute नहीं बोले कहते Sam Petroda. Option A, teamwork. B, team interaction. C, diversity in the workplace. And D, to exercise leadership and to accept it. What did Sam Petroda say about teamwork? As Sam Petroda said, there is no substitute for dash. What is the correct answer? It is option A, teamwork. Lakshmi, yeah. Very good. So, option A, teamwork is the correct answer. Option A, teamwork होजी ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न देखिए. परवर्ती प्रश्न आला the spinal form of polio affects dash. पोलियो जो दुईटा फॉर्म गोटे होची कोन बल्बार फॉर्म आ गोटे स्पाइनल फॉर्म. तो इट स्पाइनल फॉर्म रो कथा पडिची. The spinal form of polio affects dash. को पार्ट को affects करे. Option A muscle, option B lungs, option C limbs, option D legs. Limbs. Option C limbs. Mr. Somya, Monali, limbs. Amareshwar, God bless you. So limbs is the correct option. The spinal form of polio affects the limbs, where the bulbar form of polio affects the lungs. Yes or no? So limbs is the correct answer. Parvati Prashna. At the railway station, the potato lady. At the railway station, Kala grandmother dash. Option A, continued to whisper. B, didn't talk to others. C, kissed the writer's forehead, and D, became sentimental. At the railway station, grandmother. Option A, continued to whisper. B, didn't talk to others. C, kissed the writer's forehead, and D, became sentimental. Option C, Santanu, Shibu, Mr. Somya, Trinath, Monali, Mare, D तो भूल होगा, sentimental तो से ही नोतिले बेटा. तो ठीक उत्तर होची option C. It is she kissed the writer's forehead. The last contact between us, I cherish the most imprint. The line is written there. So option C. This is correct answer. परवर्ती प्रश्न देखिए. At the story, the monkey's paw opens. Then they start हुए. The night described is dark and dash winter night. Dark and dash winter night. Option A, stormy. Option B, quiet. Option C, rainy. Option D, perilous. So at the story, the monkey's paw opens. The night described is dark and dash winter night. Koda ठीक उत्तर.
सुनयनन पट्टनायक बाबा करवा आज आज थर्ड फेज गोटे लाइव सेशन करी तुम मान 5 मिनट हो लाइव कथा स्टर्मी द करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्टर्मी सो एट द स्टोरी द monkey spa open the night described is dark and stormy on night so stormy option A stormy yeah Mr. Soumya Monali ए हूँ ठीक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न हूँ कौन पे आई सपोज आउट थ्री बोट जस्ट डोंट आर थ्री बोट्स जस्ट डोंट काउंट दिस सेंटेंस मीन्स एटा जो मिस्टर व्हाइट कहले ये सेंटेंस अर्थ कौन ऑप्शन आई द बोट्स ऑफ मिस्टर व्हाइट मिस्टर व्हाइट एंड देयर सन सर्वेंट हैव नो इंपोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियन Option B, Mr. White, Mrs. White and their son Herbert never cast votes. Option C, the political leader don't count the votes of the 3%. And option D, the 3 votes have huge impact on political leaders. Which is correct? Koda thik uttara pile? Koda thik uttara फटाफट कहवा? The right answer is option A. Yeah, option A, the votes of Mr. White, Mrs. White and their son Herbert have no importance for politician. Option A is the correct answer. Option A. Shivapatra. Paravarti Prashna. Though Charlie's father and mother were separated, his mother did not seek what? जदि भी चार्ली के माँ बापा अलगाई जाइतिले तथापि तांको माँ कौन माने डिमांड करी नथिले Option होची legal help, B alimony, C consolation message and option D telegram message. Alimony होची ठीक उत्तर Mr. Sharma. Alimony होची ठीक उत्तर option B alimony. Alimony कहले compensation. जेहेतु because she was also earning 25 pounds a week and it was sufficient to maintain herself and her child. That's why she didn't seek alimony. नहीं की so alimony होची ठीक उत्तर option B alimony होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न लिखिए so mysterious was said by whom in a mumbling tone mystery of the missing cat mysterious was said by whom in a mumbling tone option A Sri Maharana option B a bodyguard of the minister option C the minister's PA option D the public relation official ठीक उत्तर कौन which is correct के कहतला mysterious who said whose word or this answer is the minister's PA no option triple I the minister's PA her saying mysterious so option C होची ठीक उत्तर the minister's PA परवर्ती प्रश्न Dash according to Steve Jobs was the best thing that could have ever happened to him. Dash according to Steve Jobs were the best things that could have ever happened to him. Option A is falling out with the board of directors. Option B is thought running away from the town. Option C begging apology to David Packard and Bob Noyce. Option D getting fired from Apple. Which is correct? Fire from Jobs means fire from Apple. Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. This is the word of Steve Jobs. So the right answer is option D. Option D. Monali. Manas official. Mr. Soumya. Good. Paravarti Prashna. The Ballad of Peter Gilligan. Father Peter begged forgiveness of God and repented of dash. Father Peter begged forgiveness of God and repented of dash. Option A is grumble that he had no rest nor joy nor peace. Then option B, having sent away the poor man. Option C, being exhausted of service to his people. And option D, his earlier action. So Father Peter begged forgiveness of God and repented of dash. को जिनसों पर अनुताप करते ले भगवान को क्षमा मांगी है His grumble that he had no rest, no joy, no peace. Then having sent away the poor man, being exhausted of service to his people,
and option D is earlier action. The right answer is his earlier action. Tankara Purbakruta Karma, earliest action. So option D is the correct answer. Option D is right. Parvati Prashna. Parvati Prashna, according to Henry Longfellow, A Psalm of Life. According to Henry Longfellow, we the people should act dash. We the people should act dash. Option A. Kono is dead. Sorry. In the past, in the present future. Option C, in the living present. And option D, throughout our life. Quota correct. According to Henry Longfellow, we the people should act. Yes. When should we act? In the past, in the present future, in the living present, and throughout our life. Option C, Trinath. Option C, in the living present. We should act in the living present, and in the living present, the correct answer. Yes, and the living present is the correct answer. Paravarti prashna ko jiva pile. TV, in the words of Roald Dahl, keeps children gas. Roald Dahl ka matare. TV pilawan ko kono ke pare rokhe. Roald Dahl. कहूँ ये ऑप्शन ए बिजी, ऑप्शन बी क्लेमरस, ऑप्शन सी स्टिल, ऑप्शन डी नॉइजी. ये होची ऑप्शन तुमने करे. So TV, in the words of Roald Dahl, keeps children yes. Option A busy, option B clamorous, option C still, option D noisy. Code ठीक होता है. This is correct. Still means silent. They don't silent while watching television. So still is the most suitable option. Still is correct. Parvati Prashna. If one hands out a 10-pound note, money madness. If one hands out a 10-pound notes to someone, then कौन होगी? Option A, he feels a sharp pain. Option B, he begins to tremble out of fear. Option C is already attached. Option D, cruelty seizes him. A real tremor means which one? Real tremor ठीक अच्छी. Boy रचनाची इटू कोटा होगा. ठीक होता. The right answer is, which is the right answer? Option A. Option A is the right answer. He feels a sharp pain, a real tremor is a correct. Yes or no? Barabar question. The poet criticizes people who claim that death is dead. कभी से लोक मान को क्रिटिसाइज करचंती जो माने क्लेम करंती कोटा मृत बोली के. ऑप्शन ए ड्रीम, स्वप्न, ऑप्शन बी लाइफ, जीवन, ऑप्शन सी ग्रेव, मृत्यु, ऑप्शन डी सोल, आत्मा. कोटा ठीक उत्तर. The poet criticizes people who claim that death is dead. Option A dream, option B life, option C grave, option C soul. This is on soul. Soul, yeah, it's the correct option. So the poet criticizes people who claim that soul is dead. So soul da option D da होची ठीक उत्तर. वर्तमान जीवा ये थिला approach poetry non-detailed section. वर्तमान जीवा हमें पहले कोटा choose the correct option माने grammar section ऊपर कुछ है. हला grammar section. He paid Rs60 to buy the book. He paid Rs60 to buy the book. It Rs60 ta underline है क्या ची? Its WH interrogative sentence will be. WH interrogative sentence will be. कौन आवा? Option I, how did he pay to buy the book? Option B, how many did he pay to buy the book? Option C, how much he paid to buy the book? Then option D, how much did he pay to buy the book? Kota ठीक उत्तर आवा. He paid Rs60 to buy the book. Rs60 होची underline है क्या ची? चारटी option भी through WH कोटा है. WH माने it's WH interrogative sentence will be. How much did he pay? Not he pay. So option D. How much did he pay? Because he paid अच्छी. He paid जेहेतु अच्छी past tense अच्छी. We have to use did. How much did he pay? The correct answer. Clear? So option D. Parvati Prashna.
You can find a good doctor like him nowhere. You can find you can find a good doctor like him nowhere. କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଏଭଳିଆ ଡାକ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ. ଓକେ ୟାର yes no question କଣ ହବ yes no interrogative pattern କଣ ହବ ବୁଝିଲା ପିଲେ ऑप्शन ଅଛି ତମ ପାଖରେ can you find a good doctor like him and nowhere. Option B, can you find a good doctor like him anywhere? Option C, can you found a good doctor like him nowhere? Then option D, could you find a good doctor like him nowhere? Kota correct file. Kota correct. Which is correct? Grammar section. ठीक उतरा होची option B या option B. Option B कौन सी देखो एनालाइज करूचे हमें कैन यू फाइंड ए गुड डॉक्टर लाइक हिम नोवेयर जदी अछि हमको एनीवेयर क्वेश्चन कला बेले एनीवेयर लगेबार अछि तो एतरे एनीवेयर नाही. ऑप्शन बी रहिला कैन यू फाइंड ए गुड डॉक्टर लाइक हिम एनीवेयर दिस द करेक्ट ऑप्शन. तापर थर्ड टा काहे कि बोलबो कैन यू फाउंड असला कैन आगे के भी V2 फॉर्म लागिबो नाही फाउंड एटा भूली गेला देन कुड यू फाइंड कुड तो लागिबो ही नाही. ओके सो मोटा मोटी भाबे एटा होची ऑप्शन आई होची ठीक उतर. परवर्ती प्रश्न को जिबा वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस. वन शुड keep one's promise. जने लोक निजर प्रतिज्ञा रक्षा करबा उचित है. So one should keep one's promise. It's correct passive. यार correct passive टा कोन हबो what would be the correct passive. Option A, one's promise should be kept. Option B, promise should be keeping. Option C, promise ought to be kept. Option D, promise should be kept. कोटा ठीक होता. One should keep one's promise. यार passive form कौन हबो. Option देली one's promise should be kept. Option B, promise should be keeping. Option C, promise ought to be kept. Option D, promise should be kept. So the right answer is it is option D. Promise should be kept. Promise should be kept. एतरे माने कौन कहला प्रतिज्ञा करूच माने रक्षा करबा उचित. एतरे आवश्यक ही नाही तमे वन को लगेबा. वन टा जेहेतु एनोनिमस प्रोनाउन एठी प्रोनाउन रो कोनसे आवश्यकता ही नाही एंड ऑप्शन डी होची मोर करेक्ट. परवर्ती प्रश्न. गुड मॉर्निंग सर आई सेड टू मिस्टर नायक. गुड मॉर्निंग सर आई सेड टू मिस्टर नायक. इट्स इनडायरेक्ट स्पीच विल बी. Indirect speech कौन हबो. Good morning sir, I said to Mr. Naik. Option A, I said good morning to Mr. Naik. Option B, I wished good morning to Mr. Naik. Option C, I greeted Mr. Naik good morning. And option D, I congratulated Mr. Naik and said good morning to him. Someone God bless you beta. तो यार ठीक उत्तर कहाँ हो. What is the correct answer? Option C होची I greeted Mr. Naik good morning. This is wrong. Option B, I wished good morning to Mr. Naik. This is the correct option. This is the correct option. Option B, Manali. Yeah, you're correct. So I wished good morning to Mr. Naik. Good morning, sir. I said to Mr. Naik. Said अच्छी जेहेतु या को हमें कौन करीबा बीटूर करीबा. I wished good morning to Mr. Naik. परवर्ती प्रश्न. परवर्ती प्रश्न ला दिस इज गोपाल स्कूटी. गोपाल्स अंडरलाइन है क्या अच्छी. This is Gopal scooty. The suitable WH word for the underline part is ये जो माने गोपाल टा अंडरलाइन है कि अच्छी यहाँ पे को WH word हमें व्यवहार करते. ऑप्शन ए which, ऑप्शन बी who, ऑप्शन सी whose, ऑप्शन डी whom. कोड़ा ठीक होता. So this is Gopal scooty. गोपाल टा अंडरलाइन है क्या अच्छी. आम पाके ऑप्शन अच्छी चारटा which, who, whose और whom. whose हु जो एकदम करेक्ट. whose टा ही व्यवहार हवा जेतबे मनुष्य मान विषय रे व्यवहार कर. रश्मि रेखा गॉड ब्लेस यू बेटा. परवर्ती प्रश्न. the prizes have been distributed अंडरलाइन है कि अछि. The prizes have been distributed among the peoples. The suitable phrasal verb for the underline part is. एटी जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहिला या पई को फ्रेजल वर्ब टा में व्यवहार करिबा. ऑप्शन ए पुट अवे. ऑप्शन बी गिवन अवे. ऑप्शन सी गिवन वे
and option D made of. सब में वर्ड अच्छी डिस्ट्रीब्यूटेड या पे को फ्रेजल वर्ब टा में व्यवहार करिवा पुट अवे गिवन अवे गिवन वे एंड मेड ऑफ given away Mr. Somya option B given away is correct so the prizes have been given away among the रश्मि बुझी पारनु कौन असुविधा होची कौन असुविधा होची मोर व्हाट्सएप नंबर देइची व्हाट्सएप नंबर अछि मोर जदि कोटा बुझी पारुनो ताले यू कैन मैसेज मी मोर व्हाट्सएप रे तुम माने मते कहि परिबो कोटा बुझी पारुनो ठीक अछि एग्जाम पूर्व आमे गूगल मीट रे क्लास करबा पिले इंग्लिश ग्रामर ऊपर जहा प्रॉब्लम अछि लाइव क्लासेस सब लाइव क्लासेस इन द सेंस गूगल मीट रे आमे मला करबा क्लास सब बुझेला एंड ट्राई करी डाउट सब क्लियर करबा पे ऑनलाइन रे एतिकी ही करि परिबा हमें सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पिले नेक्स्ट क्वेश्चन हैला तमरो नोबडी नोस व्हाट हिज डेस्टिनेशन इज nobody knows what his destination is nobody knows what his destination is kehi jananti ni tar destination kon it's yes no interrogative pattern will be yara कौन कौन कहते हाँ yes no interrogative pattern कौन हो ऑप्शन आई does nobody knows what his destination is option B does anybody knows what his destination is option C does anybody know what his destination is and option D does anybody knows what his destination is getting so एठी कौन हम ठीक उत्तर पिले ऑप्शन थिला nobody knows what his destination is शिबू कहला ए आ सौम्य कहला सी देखो पिले मु करेक्ट ऑप्शन टा केमती बाछिबा मु कहि दोछि तुमको शिबू कहला ए मास्टर कहला सी ओके प्रथम जिंस वाला डज एनीबॉडी नोस डज आउ नोस एटा हबो नै डज लागिले एपटे नोज लागिबो नै एटा हबो नै सीधा देखा जाउछि नंबर 2 does anybody knows एटा भी हबो नै एपटे डज लागिछि एपटे नोज लागिछि दुटा क्लियरली रिजेक्ट आइ गेला 3 नंबर होइला does anybody know what his destination is जेहेतु nobody लागिछि एटी anybody लागिबो nobody लागिछि तो anybody लागिबो सो सिंपल एटा आइ गेला ठीक परवर्ती रे भी देखिया परवर्ती कोन अछि लास्ट टा does nobody एटी nobody लागिछि माने एटा हबो नै सिंपल आमे केवल किछिटा सेंस जदी यूज करछे क्लियर हे जीव पिले हमर एमसीक्यू नंबर एमसीक्यू स्पेशली ए जो क्वेश्चन यस नो बुझेला कोडी दोज लागिला डज एनीबॉडी नो व्हाट हिज डेस्टिनेशन इज दोज कोडी लागिला अरे दोज कोडी लागिला परवर्ती प्रश्न देखिबा आई डैश लिव इन राउरकेला with my family when I was a college student I dash live in Raulkela with my family when I was a college student मुझे तो कॉलेज रे थले पुरो होतले एठी कोन करबा हमको चारटा जिंस दिया आइची मॉडल दिया आइची से भीतर गोटे लगेबार अछि ओ यूज्ड टू will could and might अछि हला सो यूज्ड टू will could और might ए भीतर कोटा लागियो I was said of those no dogs. So used to will could or might also. कौन लगी हुई थी? हमारा aussi I live in Raulkela with my family when I was in college. I was a college student. कौन हुआ? Used to past रे ଗୋଟେ continuous action किस समय धरी चलती हुआ action विषय रे हम जब कहूँ चे तो तब हमें used to व्यवहार करता हूँ so used to the correct answer. Used to परवर्ती प्रश्न देखिबा पिले our farmers use manures so that they may get good crops हम चाषी माने manures कहले सार व्यवहार करमती that they may get good crops एठी जो मे टा लागिला मे अंडरलाइन हे गसी मे टा मॉडल जुला क्वेश्चन
So the use of modal may suggest कौन suggest କରୁଛି option A possibility संभावना, option B ability सक्षमता, option C probability संभावना and option D purpose reason कारण कौन हबो एटी मे जो व्यवहार है एठी जो मैम मन रखिबा आमे एठी ग्रामर रूल्स पढो ना एठी जो हिसाब रे यूज होईची से विषय रे आमे चिंता करिबा कोन व्यवहार है The right answer is option D. It's a purpose. कारण हला जे से माने भलो क्रॉप पाइबे तो सही अर्थ रे पर्पज अर्थ रे मेटा को व्यवहार करा दिछि प्रोबेबिलिटी नो एटा पर्पस बुझिला पिले मु सेति पे तो कहले तमे प्रोबेबिलिटी कहबो बोली मु आगुरु कहि देली तुमको जे बुझी की कहबा बोली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिले Next question है uncle may call Dash father tonight. Uncle may call Dash father tonight. ठीक है Dash father tonight. The suitable preposition to be used in the blank. The suitable preposition to be used in the blank is option A up, option B on, option C out, option D off. On, Sibu, correct. You are correct, Sibu. On is more correct. Call on means to visit. To meet or to visit. So on is correct. On to take. On to take. परवर्ती प्रश्न देखिबा. Next question. While a rabbit dashed under a well tree, a ripe bell fell straight on the ground. Question. While a rabbit dashed under a bell tree, a ripe bell fell straight on the ground. Option rest, rested, was resting, and had been resting. It's correct. So while a rabbit dashed under a bell tree, a ripe bell fell straight on the ground. Option A rest, option B rested, option C was resting and had been resting. Was resting. ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସମସ୍ତେ was resting ବୋଲି କହିବ ବୋଲି. Was resting ହବ ନାହିଁ. Rested. विश्राम नौतला. या फिर hard rested ହେଇଥାନ୍ତା, but hard rested it's not here. So it would be rested. So well fell straight on the ground. दुईटा action. दुईटा earlier action. दुईटा action by same tense we can use in this case. परवर्ती प्रश्न. He was convicted. He was convicted of lying. Its appropriate active voice will be. So he was convicted of lying. He was convicted of lying. से मिथ्या पाई दंडित होइचंती. Its appropriate active voice. यार appropriate active voice कौन होगा? What is the appropriate active voice? Option गुड़ी को सुनिबा. Option A. The judge convicted of lying him. Option B. The judge convicted him of lying. Option C. The judge was convicted of lying. And option D. The judge was convicted him of lying. Option B. Shuprava कहला option B. The judge convicted him of lying. VIP status कहला option B. Master boy Dipen. Master boy कहला कूटा option B. बढ़िया. So the right answer is the judge convicted him of lying. The judge convicted him of lying. This is correct. कहीं की he was convicted of lying. इटा उची तमरो ये. He टा उची subject. नहीं. तापरे convicted टाला verb of lying टा उची तमरो adjunct word टा. Simple. एथरे नहीं आउ के छे. बुझेला? It is in passive. यार active form. Conviction किए करिबो? Judge ही करिबो.
So the judge convicted, the judge ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, the judge convicted of lying him, convicted of lying him ତ ହବ ନାହିଁ। The judge convicted him, convicted ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଲଗେଇବା him, convicted him of lying, yeah it's correct। ତାପରେ ହେଲା the judge was convicted, judge ନିଜେ ତ was convicted ହେବେ ନାହିଁ ନା, ତାପରେ the judge was convicted, ଦୁଇଟା structure ଦେଖ, judge was convicted ତ ହବ ନାହିଁ, simple କଥା ଅଛି। So that's why the correct answer is option B, the judge convicted him of lying। परवर्ती प्रश्न, परवर्ती प्रश्न वाला M, don't cross a busy road by riding fast। don't cross a busy road by riding fast, माने स्पीड रे जाउथला बेले जोर जोर रे रोड को क्रॉस करना। सेट द ट्रैफिक पुलिस टू ए कॉलेज बॉय, इट्स सुइटेबल इनडायरेक्ट स्पीच, यार सुइटेबल इनडायरेक्ट स्पीच कौन हबो? ऑप्शन आई, द ट्रैफिक पुलिस सेड द कॉलेज बॉय नॉट टू क्रॉस अ बिजी रोड बाय राइडिंग फास्ट। ऑप्शन बी, द ट्रैफिक पुलिस वार्नड ए कॉलेज बॉय नॉट टू क्रॉस ए बिजी रोड बाय राइडिंग फास्ट। then रहिला, the traffic police advised a college boy to cross a busy road by riding fast। then रहिला, the traffic police forbade a college boy not to cross a busy road by riding fast। ए चारिटा भितरु कोउटा ठीक उत्तर आ किए कहबो मते? कोउटा तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, बढ़िया भी है स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, द ट्रैफिक पुलिस वार्नड ए कॉलेज स्टूडेंट, सतर्क करैछि कोन, ए कॉलेज बॉय नॉट टू क्रॉस ए बिजी रोड, टू नॉट टू नहीं, एठी अछि जे डोंट क्रॉस अछि, इंपेरेटिव सेंटेंस अछि, एठी हमें नॉट टू व्यवहार करिबा, डोंट जेतेबेले था इंपेरेटिव रे नॉट टू करिताउ। सो ऑप्शन बी, द ट्रैफिक पुलिस वार्नड ए कॉलेज बॉय नॉट टू क्रॉस ए बिजी रोड by riding fast, B is correct। परवर्ती प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो माने देखि नबो, मोर एबे रिसेंटली जो क्लास सब करथिली कंटीन्यूअस दशहरा छुट्टी रे टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रो क्लास करछि मु, टोटल एक्टिव वॉइस रो मु क्लास करछि, तो माने क्लास जॉइन करनो। मेन कथा तमरो पेशेंस नाही वीडियो टाको शेष पर्यंत, क्लास गोटे क्लास 10 मिनिट रे सरीबो नाही बाबू। जो लोक कहउछि 10 मिनिट रे पासिव सिको, 5 मिनिट रे पासिव सिको कि माने 15 मिनिट रे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिको, से माने दुनिया रो सबुठारो बड़ व्यापारी, पैसा पाई व्यापार करछन्ते, बुझेला? से बळा पाठ केबे पढा ही पारिबो नाही, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बिना बेसिक रे आमे 10 मिनिट रे किछि गोटे जानिबा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बुझेला? हमको बेसिक जदी ठीक अछि जणा अछि, किछि रूल्स जानिले आमे करि परिबा, बुझेला? बट बिना बेसिक रे आमे करि परिबा नाही नले। परवर्ती प्रश्न देखिबा, इफ यू डैश इन माय प्लेस, इफ यू डैश इन माय प्लेस यू वुड हैव डन द सेम थिंग। ग्रेटेड भी हमें लगे परिबा मिस्टर सौम्य, ग्रेटेड भी हमें लगे परिबा, मु मना करनी। सो इफ यू डैश इन माय प्लेस यू वुड हैव डन द सेम थिंग, कंडीशनल आसिला पले। इफ यू डैश इन माय प्लेस यू वुड हैव डन द सेम थिंग, कंडीशनल लागिला, ए डैश जगह कोन लागिलो, वेयर, हैड बीन, हैड, आर। इफ यू डैश इन माय प्लेस you would have done the same thing, it कौन लागिलो? ऑप्शन सी, had, हबो नहीं। नमस्ते शिवू, would have done ना, where हबो नहीं। अरे पिला would plus have plus v3, would plus have plus v3 मेन क्लॉज रे जदी अछि, एपटे had plus v3 रहिबो, गोटे जिंस मन रखिबार अछि। एपटे यदि would have plus v3 रहिलानी, एपटे निश्चित भाबे had plus v3 रहिबो, so it would be had been। this is the structure, conditional structure, 4 नंबर conditional structure सी है, थर्ड conditional structure सी है। कंडीशन दा स्ट्रक्चर ऊपर माने बेस करके हुए बने, वो ऑप्शन फास्ट ही जाउछ। सॉरी सॉरी सॉरी,
समय गलानी तो 35 मिनिट्स हे गलानी सेदी पई टिके स्पीड हे जाउछ ओके लास्ट क्वेश्चन शेष क्वेश्चन पिले शेष क्वेश्चन आसंता खाली आ गोटे सेट नै आसीमु शेष क्वेश्चन होची द मैन टोल्ड sorrowfully that he had lost his mobile. The man told sorrowfully that he had lost his mobile. The appropriate direct speech will be यारो appropriate direct speech कौन हो प्रश्न आउतर सुनिबा the man told sorrowfully that he had lost his mobile ठीक अछि एटा होची क्वेश्चन यारो indirect speech कौन हो ऑप्शन ए the man said I lost my mobile. Option B the man said alas I have lost my mobile. Option 3 the man said oh god I've lost my mobile. Option D the man said alas I lost my mobile. कौन हो देखिए पिलाने कौन कहउछन ऑप्शन ए द मैन सेड आई लॉस्ट माय वॉलेट हबो नै शिबू वेबसाइट द मैन सेड आई लॉस्ट एटा भी हबो नै मिस सौम्य रा हबो नै बाबा छोटिया जिंस गोटे मन रखिबा when the reporting verb is in past tense whatever present tense form will be there in the reported speech that will be converted into its corresponding past. This is the rule rule कहला जदि तमरो रिपोर्टिंग वर्ब टा पास्ट टेंस रे अछि एपटे जो प्रेजेंट टेंस रिपोर्टेड स्पीच रे जो प्रेजेंट टेंस थिबो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स करेस्पोंडिंग पास्ट जेमति प्रेजेंट सिंपल थिले पास्ट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस थिले पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट थिले पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बीटा करेक्ट मतलब कोच बीटा करेक्ट सो बी रे कोन छी द मैन सेड अलास प्रथम कथा अलास ता गोटे माने वर्ब जहां में sorrowful manner पे व्यवहार करता हूं सो द मैन सेड अलास आई हैड लॉस्ट सॉरी कोडी अछि द मैन सेड आई लॉस्ट माय मोबाइल द मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल द मैन सेड ओ गॉड आई हैव लॉस्ट I lost yeah first one is correct you are correct I lost my mobile this is correct एटा होची कोन पिले एटा होची हम को स्पीच रे कन्वर्ट करछु डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करछु सौम्य यू आर करेक्ट एठी मु गोटे जिंस बोली जाइतिली सेटा जे क्वेश्चन रो अछि हमको ताको डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करिवार अछि डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करिवार अछि आई एम सॉरी गाइस जे तो हमको डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करिवार अछि यू आर करेक्ट द मैन सेड आई लॉस्ट माय मोबाइल दिस इज करेक्ट जे तो ही हैड लॉस्ट एटी अछि the man told sorrowfully that he had lost sati अछि एटा हे गेला ऑप्शन ए इज करेक्ट यू आर करेक्ट ओके सो आज मैं एते के पिले आसंता काली बाकी जिंस पास्ट सिंपल थिले पास्ट परफेक्ट यू आर करेक्ट तो मु माने कोडा कहउतली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कहबा कथा कहउतली एटा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करिवा जिंस अछि बुझियला तेणु तमर जिनस करेक्ट थिला हो हे जाए एमती हे जाए लाइव सेशन रे कथा होसे पिले एंड आई एडमिटेड माय मिस्टेक आज तो नुआ काली करबा मोनाली एमआईएल रो सेट काली करबा बेस्ट करबा ओके सी यू टुमारो बाय बाय टेक केयर जय जगन्नाथ।